Acha ji, pressure question 26 to question 30. Let's start. Question 26. Some doctor measure blood pressure by using a mercury manometer. Blood pressure varies by 5.6 kilopascals as a heartbeat. The density of mercury is 14,000 kilograms per meter cube and the gravitational field strength is 10, which is G. What is the change in the height difference between the levels in the mercury manometer during a heartbeat? अच्छा जी, pressure pressure is equals to density into gravitational field strength G into height, right? हमें प्रेशर क्या दिया हुआ है? 5.6 किलो पास्कल्स 5600 is equals to density हमें क्या दी हुई है? 14,000, right? और हमें हमें G दिया हुआ है, G भी दिया हुआ है. G is 10, which we already know, into height. Height हमने find करनी है. अच्छा, what we will do is यहाँ 50, यहाँ 14,000 और 10 मल्टीप्लाई हो रहे, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे तो 56, एक सेकेंड, 5600 डिवाइडेड बाय 14,000 divided by 10, which will give us 0.04 meters. H is equals to 0.04 meters, or 1 meter has 1000 millimeters, right? 1 meter has 1000 millimeters, so we're going to convert this meter into millimeters because the answer is in millimeters. So this will give us 40 millimeters, which will be which will make the answer A. ठीक है ना? A is the right answer. Question 27. The diagram shows a manometer containing mercury that is sealed at one end. एक end is sealed. What happens to the distance h when the manometer is taken up a higher mountain? For example, this is a mountain, right? And this is our earth. ठीक है ना? हमारी धरती. ठीक है ना? नीचे नीचे जो कंपैरेटिवली प्रेशर होगा ना, इट विल बी लोअर देन जितना ऊपर होगा. ठीक है ना? As you ascend up an altitude, the atmospheric pressure will decrease because atmosphere thinner होता जाता है. आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि ना हाई altitude पे जो मतलब बंदे भागते हैं, they have trouble in breathing because वहां एयर इतनी थिक नहीं होती जितनी नीचे है, राइट? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल नीचे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, इट विल बी मच हायर देन ऑन एन एल्टीट्यूड. दैट्स व्हाई एल्टीट्यूड पे जाके जो बॉक्सर्स होते हैं या जो ओलंपिक रनर्स वगैरह होते हैं, दे ट्रेन ऑन एल्टीट्यूड बिकॉज एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन उनको कम मिलते हैं और वो इसीलिए तैयार कर रहे होते हैं. सो एल्टीट्यूड पे देयर इज लेस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर पहले जब एक्ट कर रहा था इट वाज दिस मच, बट आफ्टर गोइंग ऑन एन एल्टीट्यूड तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो गया ना, सो इट विल प्रोड्यूस ओनली दिस मच फोर्स प्रेशर नाउ. और ये जो हाइट है दिस विल राइज, राइट? दिस विल राइज, और जो हाइट है इट विल रिड्यूस डाउन टू, एक सेकेंड, पहले इतनी थी ना, अब चूंकि प्रेशर कम है it will reduce down to till here. Just an estimate. I'm just showing you what the concept is. Acha, that means that the height decreases because the atmospheric pressure decreases with the height. So A is the right answer. Question 28. The pressure on the gas contained in a sealed syringe is slowly doubled. The volume of the gas halves. What must be true about the density and the temperature? Acha, for example, this is a syringe. पहले इतना था, pressed, the volume was this much, and as they said कि volume decrease हो गई है and it is now half
of its prior self. So V1 will be this and V2 will be this. ठीक है ना? They said what must be true about the density and the temperature of the gas. Temperature will stay constant, it will remain constant, while the density will increase. You want to know why? Because जब volume ज़्यादा था तब there the particles were sparsely populated, right? लेकिन जब volume कम हो गया जो सारे पहले वाले particles थे ना they were forced into a smaller volume, right? They were forced into a smaller volume, therefore making them fit in a smaller volume, which increases the density. And the density must be doubled for that to combat the forces of volume. जो volume की lessening हुई है वो compensate कौन करेगा? That will be compensated by the increase in density. ठीक है ना? So C is the right answer. Question 29. Nail X is tapped into wood. Nail Y is tapped into the same wood using the same force. Which nail moves furthest into the wood and why? अच्छा, for example, ये आपकी skin है. Wait, this is your skin, and this is a wooden block, or this is a needle. This is a needle. This is a wooden block. और इन दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है, राइट? इनके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लग रहा है. कौन सी चीज ज्यादा हर्ट होगी आपको? कौन सी चीज आपको ज्यादा दर्द देगी? दैट वुड बी द नीडल, बिकॉज नीडल छोटा एरिया, सरफेस एरिया कवर करती है कंपेयर टू अ वुड, क्योंकि वुड का सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन द नीडल सरफेस एरिया. ठीक है ना? और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. और जितना छोटा फोर्स होगा ना उतना ज्यादा प्रेशर होगा, इफ इवन इफ द फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट. जितना कम एरिया होगा ना उतना ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा. सो इनमें से एरिया सबसे कम किसका है? वाई का है या एक्स का है? ऑफ कोर्स एक्स का है. एक्स का एरिया सबसे कम है. सो इट वुड आइदर बी ए और बी. एक्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर प्रेशर. Yes, on the wood. A is the right answer. X produces smaller pressure. No, it doesn't. 30. The list gives the symbol for some physical quantities. Acceleration of freefall G, atmospheric pressure P, density of water P rho, density of water, depth of water H. Which quantities from the list are used to calculate the total pressure at the bottom of the lake? At the bottom of the lake, for example, this is a lake and you are at this depth, you are at this depth, right? पहले एक pressure act करेगा which will be the atmospheric pressure, which is approximately 100,000 kilopascals, I mean 100,000 pascals. And then will come the pressure caused by the depth of you going in the water. The water का pressure होगा, then that will act. So we have to subtract the atmospheric pressure from the total pressure for us to get the pressure from the water, right? So we'll have to subtract capital P minus करेंगे, right? We'll minus that by the total pressure. Total pressure minus atmospheric pressure, which is P. Then we'll get the pressure from the bottom of the lake. ठीक है ना? समझ आई? So that's it. आपको मैं इसका आंसर दे देता हूँ, which is gonna be ये A. अच्छा, आपको मैं एक चीज बताना भूल गया. द प्रेशर कैलकुलेटेड at the bottom of the sea will be calculated by pressure is equals to rho gh.
So we need G, H and rho and atmospheric pressure. चारों के चारों. ठीक है ना? So that's all for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.